What is the next thing? Pharma, bitter pill of pharma. क्या हुआ? ट्रम्प बाबा ने उसकी छड़ी को वापस वेव कर दिया. This magic wand is good for America perhaps, but bad for all the others. क्या किया ट्रम्प ने? ट्रम्प imposed new tariff 100% for 2028 and 200% for the year thereafter. The good thing about it is that it is 0% till 2028. अच्छा, तो इससे क्या होगा कि कंपनीज विच आर अमेरिका फेस, यूएस फेस, दैट मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड शिप टू द यूएस, उन पे थोड़ा असर तो पड़ेगा, राइट? बट देन मार्केट आप देखेंगे आज, तो आज इसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा. जो अब मेरा ट्वीट्स के फॉलोअर्स है वो जरूर देखिएगा. आई हैव ट्वीटेड अबाउट दिस सेइंग दैट इतनी बड़ी न्यूज तो आई थी, आइडियली सम reaction should have been there, but the pharma index today fell only 0.77%, which is quite small, really, if you look at it. Now, 0.77% in the Nifty Pharma index, it is negligible compared to the possibility that exists. Why is the market not really bothered? इधर आप देखिए, इधर ये फार्मा इंडेक्स की चार्ट है. नाउ देयर इज अ very very good move, in the pharma index. It is trading near the highs. All right, and then if you see, these are all returns across various periods which I have put. Year to date is about 13.8%, which is a very very decent return for a sectoral index. Now you must compare this to the Nifty. Nifty is minus 8%. So it is very, very evident that pharma has been a good performing sector in this year for our markets. And if you take a 1 year time period, it is even better. It is 15.5%. But what is more interesting is a 3 year performance of pharma, which is a solid rocking 80%. मतलब फार्मा ने तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है. 3 year, 5 year, not much to choose. 80%, 76.5%, but it tells you the story that people still believe the pharma story of India. And why is that? Because producing generics in the US, it remains very challenging for them because it is due to sustained price erosion. Okay, there. Intense competition hota hai US mein for this manufacture of generics. And then there are multiple dosage forms and stringent quality standards. And एक तो इतना बड़े वॉल्यूम कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए इन द यूएस इट वुड टेक डेकेड्स. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कि ये सब डिसाइड किया, इसने ये छड़ी बना दी और बोले 100%, 2% ये सब किया और मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस शुरू हो गई. नहीं होगा. दिस विल टेक 5 to 10 years for them to create the manufacturing. So Indian companies don't seem to be too worried because we are supplying 43% of the generics to the US market. Now that's a very, very sizable share of the market. तो ये कहीं ना कहीं तो चल जाएगा. देखिए अभी 28 तक तो ट्रम्प भाई साहब को तो बाय बाय करने का टाइम आ जाएगा. फिर बाद में जाने क्या होगा, ये सब टैरिफ्स का क्या होगा आगे, वो तो we'll all have to wait and see. बट ट्रम्प को तो बाय बाय हो जाएगा वहां पर 28 में. So Indian companies don't seem to be too worried. Declines, if any, may be gradual. That is what I feel. And that is why what is the market is proving today. हाँ, आज के दिन में देखेंगे तो आपको थोड़ा डॉक्टर रेड्डी में बहुत सिवियर डिक्लाइन दिखेगा, बट दैट इज स्पेसिफिक टू डॉक्टर रेड्डी. उनके जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है दैट डिड नॉट कम आउट वेरी वेल, सो द मार्केट इज पनिशिंग देम फॉर नॉट डूइंग वेरी वेल. नाउ निफ्टी फार्मा जो है, जिसका ये चार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 20 stocks. Now these 20 stocks is a mix of US based as well as India based pharma. So this will give a balanced kind of response. ठीक है? It is if you want to see specific to US, you'll have to construct your own index. I don't think we have a specific index which says that Nifty US based pharma stocks. ऐसा आप create कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं.
तो शायद उसमें आपको गिरावट ज्यादा मिले पॉसिबली, बट यू कैन चेक इट इफ यू आर so inclined. But the long and short of what I said is minimal response to this news, which is good because when the market does not react to seeming bad news, the underlying trend should be deemed to be पॉजिटिव। ऑलराइट, सो एक्सपोजर रिस्क इधर देख लीजिए, इसी स्लाइड में है। यूएस सेल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, Zydus is at 43%, Aurobindo Pharma 42%, Lupin nearly 42%, and so on and so forth, all those coming down. Alchem is more India phase, Cipla is more India phase, right? So that is why their यूएस एक्सपोजर इज इन दी 20%। यूएस का एक्सपोजर के बिना काम नहीं चलेगा फार्मा स्टॉक्स को। तो पूरा इंडिया फेज वाला तो आपको एकदम स्मॉल स्केल में ही मिलेंगे। बड़े बड़े जो कंपनी है दे हैव टू हैव यूएस फेसिंग एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फ्लरिशिंग इन देयर बिजनेस। सो दिस इज द थिंग अबाउट फार्मा। अभी तक मार्केट डज नॉट सीम टू बी ओवरली कंसर्न। तो कोई ग्रेजुअल डिक्लाइन हुए एंड स्टॉक्स डिक्लाइन इनटू सपोर्ट, we should think about buying that as a buying opportunity rather than anything.